Friends, you are watching post-GATE counseling for mechanical engineering. After the B.TECH, the biggest question is what to do. And after the writing GATE examination, the next question is how to apply the GATE score. So the GATE score can be used in public sectors. It can be used in taking admission in M.TECH, MS, M.TECH plus PhD, that means integrated courses. And primarily, public sectors are the first preference of the many aspirants, and the top rankers of the GATE usually prefer the public sectors. But individual choice is always important. Selection of the college for masters and selection of the stream both are important. इसलिए दोस्तों इस सेशन की इम्पोर्टेंस खास है, इसलिए क्योंकि आपका कॉलेज का सिलेक्शन और आपके कोर्स का सिलेक्शन दोनों इम्पॉर्टेंट होता है. We will talk one by one and we will discuss almost every aspect. जो लास्ट ईयर के कट ऑफ्स थे IIT के M.TECH में या ISC के लिए M.TECH के कोर्स के एडमिशन के लिए, उन कट ऑफ्स को हमने ऑब्टेन किया है थ्रू RTI, एंड इन एडिशन टू दैट देयर आर सम डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट. तो रिलायबल ऑथेंटिक डेटा है. मैं और मिस्टर D.K. अरोरा हम दोनों लोग बात करेंगे. विल कीप ऑन टॉकिंग एंड डिस्कसिंग. आपकी जो क्वेरीज होंगी आप कमेंट बॉक्स पे सबमिट करते जाइए. उनमें से जो रेलेवेंट क्वेरीज होंगी वो उनको टेकअप करेंगे. जो स्टूडेंट्स गेट काउंसलिंग से रिलेटेड 1-to-1 हम लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आज के बाद, तो वो मेडिजी वेबसाइट में जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन कर दें, जिसमें पोस्ट गेट काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन है. वी विल कंडक्ट दी जूम सेशंस. MeDG will conduct the interview guidance for the public sectors also. आपके लिए जो M.TECH एडमिशंस के लिए जो गाइडेंस होगी वो भी हम लोग देंगे. So overall this session will help you a lot in planning and your strategy for the post gate. So let us have some look on the data which is available. This year in GATE 2023, rank 1 candidate scored 90.67 marks. And last year also it was a similar marks 90.05, score 1000. Mechanical engineering का पेपर गेट का relatively easier था. We have seen this year civil engineering and electrical engineering cutoffs are less than the last year, and the toppers scores are also less than the last year. But mechanical more or less similar है. Production and industrial engineering first ranker this year scored 87.33 marks, and last year GATE 2022 topper scored 95 marks. तो दोस्तों दीज आर जस्ट फॉर रेफरेंस. क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात करते हैं कि गेट क्वालिफाई, वैसे तो गेट क्वालिफाई करना कोई बहुत इम्पॉर्टेंट वाला बेंचमार्क नहीं है, बट यस क्वालिफाई, दिस डजंट गिव यू द गारंटी ऑफ एडमिशन, बट दिस गिव्स यू एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन. सो गेट 2023 द जनरल कट ऑफ वाज 28.4 marks out of 100, OBC was 25.5 and SC/ST cutoff was 18.9. It is close and similar to the last year, almost similar. Production and industrial engineering cutoff this year was 44.2 and last year was 43.7. It means the production score is more, right, easier, on the easier side. OBC was 39.7 and 39.3 last year. In mechanical, just for an idea of students, yes, कि at which rank, what is GATE score and how many marks. So rank 1 90.67 marks, rank 9 83.3 marks, score 976. At 49 rank, at 9th rank it was 976 score and 83.3 marks. Yes. At 49 rank 790 score, 71.33 marks. That means 12 marks and 40 ranks. Yes. That is the correlation. हाँ, आप ऊपर तो देख रहे हैं, आप नीचे आके देखते हैं. फिर जब रैंक 105 पहुंचे, मतलब 100, the score comes to 805 and marks are 68.33. फिर 200 रैंक के आसपास है 763 स्कोर एंड फॉर 64 मार्क्स. फिर 500 के रेंज में 510 698 इज द स्कोर एंड 59 वेर द मार्क्स. 1000 का अगर रैंक है, लगभग 1000 रैंक, 642 वाज द
स्कोर एंड 54 मार्क्स। तो अरोड़ा जी लगभग 650 के रेंज तक तो आईआईटी मिल जाते हैं, तो इसका मतलब है कि 1000 रैंक तक के स्टूडेंट्स को मैकेनिकल का देखना पड़ेगा, मैकेनिकल का भी लगभग इसी रेंज में तो जाता है। 650 वाज वेरी इजी, और 2000 रैंक में लगभग 1971 प्रिसाइजली, स्कोर इज 569 एंड मार्क्स आर 47.67। तो ये आपके जनरल एक आइडिया के लिए है, नॉलेज के लिए है। दो एस्पिरेंट्स हु आर प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, वो एक यहाँ से एक जनरल आइडिया ले सकते हैं कि लगभग कितने मार्क्स पर कितना रैंक या कितना स्कोर हो सकता है। दिस इज जस्ट फॉर एन आइडिया। सिमिलरली प्रोडक्शन में देखें तो रैंक 1 इट इज 87.33 मार्क्स, रैंक 9 82.33 मार्क्स, रैंक 98 68.68 मार्क्स, रैंक 200 which is 198 52 marks, and rank 511 46 marks. So this is just for information. अगर हम देखें कि what PSUs, what after the gate and what are the options available, तो वन बाय वन अगर आप यहाँ पर देखिए गेट के थ्रू आप पब्लिक सेक्टर्स में जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर्स इज नॉर्मली ए फर्स्ट प्रेफरेंस। दैट्स नॉर्मली गेट के थ्रू आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं, लाइक डीआरडीओ है, बार्क है, सीएसआईआर है। हायर स्टडीज में इंडियन यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। हायर स्टडीज इंडियन यूनिवर्सिटीज में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, लाइक आईएससी, आईआईटीज, एनआईटीज, टॉप कॉलेजेस जा सकते हैं। रिसर्च कोर्सेज हैं, राइट, रिसर्च कोर्सेज में इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं एमटेक के, और सीएसआईआर के कोर्सेज हैं। फिर हायर स्टडीज इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज जहां पर गेट स्कोर वैलिडेटेड है, इनमें से एनयूएस, एनटीयू सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज है, फिर आरडब्ल्यूटीएच और जर्मनी की है। सो इस तरह से ऑप्शंस हैं। नीटी मुंबई एंड सम कॉलेजेस ऑफर दी। In fact, sir, as far as management courses are concerned, IISc takes 50% of the admissions for MBA based on GATE score and 50% based on CAT score. That is what is the availability for management courses. Right. जो GATE के थ्रू जो courses हैं, they are interdisciplinary courses and more suitable for production and industrial students and mechanical students. Mechanical engineering. More suitable. Yes. But कोई भी ले सकता है. NIT Mumbai offers very good course curriculum of very good packages. Placements are extremely good. फिर टेक्निकल बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मैकेनिकल के लिए हैं, जहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ठीक है गेट के अलावा और कौन से एग्जाम्स हैं, तो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज तो है ही यूपीएससी वाला, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज भी हैं जिसमें यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान एंड सो ऑन, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट। फिर इसरो का है, बार्क एग्जाम है अपार्ट फ्रॉम गेट। डीआरडीओ गेट के थ्रू स्क्रीन किया इस बार इन्होंने, और सेपरेट एग्जाम भी कंडक्ट किया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, सीआईएल है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है। फिर एसएससी के जेई और आरआरबी जेई के एग्जाम्स हैं, आरबीआई का एग्जाम है, यूपीपीसीएल के हैं, डीएफसीसीएल एग्जाम्स हैं, स्टेट के जूनियर इंजीनियर्स के एग्जाम्स हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्स हैं। About CIL, I wanted to add for the benefit of the students. CIL is almost alternating between their own exam and GATE. 1 year they are doing the shortlisting for interview based on GATE score, and the second year they are doing it based on their own exam. Right. That is what they have been. It's been observed during the last 3-4 years. Right. If we see in mechanical engineering, what is the status of the top 10 rankers from MEDG? Then rank 1 Aryan Chaudhary. He was a classroom course student. He also joined online course and he joined test series as well. Then Aman Maan secured. There are 3 candidates in 3rd rank. So Aman Maan, classroom course student, also online and test series. Kushagra Datta, online course student and test series. Chitwan, online course student and test series. Then rank 6 Rahul Kumar Patel, classroom course student. Then Rushi, then test series candidate. Rank 9 Dheeraj Kumar Jha, online course, and rank 10 Abhishek was classroom course as well as online. तो स्टूडेंट्स का जो मेडीजी के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्शनल। क्लासरूम और या ऑनलाइन, मतलब बोथ द कोर्सेस आर डूइंग। Online is also classroom only. Right. End of the day, that is also obviously online classroom only. Yes, exactly.
नाउ अगर पीआई में देखें तो टॉप 10 में 7 कैंडिडेट्स हैं, जिसमें रैंक 1 ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन क्लासरूम किसको कह सकते हैं, रोहित कुमार टेस्ट सीरीज, साकेत वाज क्लासरूम कोर्स रैंक 4, देन कुमार विशेष वाज टेस्ट सीरीज candidate, and Piyanshu test series, and again Mr. Sahu test series, and Pratik also test series. So these are the students who secured. इस बार रैंक 1 में जो कैंडिडेट थे सभी ब्रांचेज में, उनमें से क्लासरूम वाले हैं, सभी क्लासरूम है, मतलब मोस्टली सिविल सुबन क्लासरूम कोर्स, मैकेनिकल आर्यन क्लासरूम कोर्स, इलेक्ट्रिकल भंवर क्लासरूम कोर्स, आकाश श्रीवास्तव इंस्ट्रूमेंटेशन क्लासरूम कोर्स, इंजीनियरिंग साइंस देवेंद्र पाटिल क्लासरूम कोर्स, इंजीनियरिंग साइंस अगेन कुमार मनीष कुमार बंसल classroom course, and then computer science test series candidate Jaideep and Gautam outstation candidate. PI, yes. postal, yes. right. Yes. So these are the performances of the top rankers. अरोरा जी, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स को उनके इंटरेस्ट वाली बात की एमटेक एमएस में एडमिशंस कैसे मिलेंगे, क्या क्राइटेरिया है, कट ऑफ क्या होंगे, किस कॉलेज में अप्लाई करना है, किस स्ट्रीम को सेलेक्ट करना है, प्रेफरेंस क्या होगी। तो दोस्तों आपके डाउट्स भी लेंगे, लेकिन पहले ध्यान से आप ना कट ऑफ देखिए। और यहाँ पर जो कट ऑफ है ये 2022 मींस लास्ट ईयर गेट एडमिशन, लास्ट ईयर एमटेक एडमिशंस के बेसिस पर है। सो वी ऑब्टेन्ड द डेटा थ्रू द RTI and some from the official websites. It was a lot of rigorous homework has been done by the ME+PI team, and then the data is being compiled and presented here. पहले तो हम कॉलेज की प्रेफरेंस देख लेते हैं। रैंकिंग मतलब ऑन एन एवरेज, इट इज नॉट ए सिंगल फैक्टर, इट इज ए ऑन एन एवरेज कि हाउ द प्रेफरेंस इज बीइंग गिवन to the college. Then Indian Institute of Science is being preferred as top. It is not a IIT, IISc is a different college and it's one of the top colleges of the country, and it is the one of the top of the world also. It is very good college for the masters. IISc Bangalore offers two type of courses, M.TECH courses which are direct and based on your gate score you can get admission, no interview, nothing. Second is again M.TECH which are you can say based on interview call. So the two type of courses, one are direct and other are based on interview. Then IITs में से IIT Bombay offers the better placements and students give the better preference to the Mumbai. So IIT Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur, Madras, Roorkee, Guwahati and Varanasi. These are the one category of the IITs. The second category of IITs Gandhinagar, Hyderabad, धनबाद, रोपड़, इंदौर, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना एंड मांडी। इनमें से it all depends which college you give the preference. For example, you are from Telangana, you may prefer IIT Hyderabad rather than going to the IIT Guwahati or going to the IIT Roorkee or IIT BHU. So sometimes regional preference also comes into the picture, right? But most important is course. You should not choose that any course at IIT Bombay is better than IIT Roorkee or IIT Madras. No, it is not a blind choice. The choice should be on the basis of course. For example, if you are getting machine design in IIT Bombay as well as you are getting in IIT Hyderabad and IIT Madras, then your preference should be first to Bombay, second to Madras and third to Hyderabad. Yes. But if you are getting, let us say, industrial and production in IIT Bombay and you are getting machine design in IIT Delhi, then you may prefer Delhi. Yes. So course is equally important, not simply the college. Course and college together you have to take a combination. Yes, combination. तो कॉलेजेस में फर्दर हम कैटेगरी चलते हैं NITs, IITs के बाद NITs में जो सम टॉप रिनाउंड NITs, top 7 these, yes. वारंगल, top 6. सूरतकल, त्रिची, कालीकट, सूरत एंड इलाहाबाद। yes. ये अच्छे NITs परसीव किए जाते हैं, कैंपस प्लेसमेंट्स यहाँ के अच्छे हैं। एंड इसके बाद फिर DTU है, DTU हालांकि NIT नहीं है, बट NIT दिल्ली से DTU की NIT से बेटर है, NIT दिल्ली से it's DTU better having a better preference. तो दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी
फिर एनआईटी दुर्गापुर, भोपाल, कुरुक्षेत्र, राउरकेला, जालंधर, जमशेदपुर, नागपुर, रायपुर, जयपुर एंड सो ऑन, देयर आर मैनी। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस स्ट्रीम को आप प्रेफरेंस देते हैं, मीन्स आपका कोर्स कौन सा चॉइस है। कोर्स अगर आपका मशीन डिजाइन है तो उसके हिसाब से आपको फिर देखना पड़ेगा। अच्छा अरोड़ा जी, हमने एक चीज़ ये भी देखी है कि किसी पर्टिकुलर कॉलेज में कोई पर्टिकुलर कोर्स बहुत पॉपुलर होता है। That's because of the strength of the faculty, that's because of the possibly the quality of the labs that Right. they have, and even preferences for the, let's say, the prospective employers. Right. That way. Even if candidates don't get IIT or NIT, then there are some other good colleges which offer interdisciplinary courses, especially triple ITs, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल IIT इलाहाबाद है, ग्वालियर है, देन जबलपुर है, एंड In fact, ट्रिपल IIT sir, कांचीपुरम। for mechanical engineering students, the triple IT DM, that has a number of Jabalpur courses which are and Kanchipuram. Kanchipuram is Design there, and Jabalpur, manufacturing. Design and manufacturing. That is quite Yes. close to the They mechanical are the and ones which are giving a good set of courses, and obviously the placement are also एंड जो better. इसमें लास्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी ट्रिपल आईटी, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दे आर मोर ओरिएंटेड टू द कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर। Sir, one fundamental difference between Indian Institute of Information Technology and International Institute of Information Technology is that the Indian Institute of Information Technology is by MHRD, and International Institute of Information Technology is industry funding plus state government. That is And the those basic courses difference. are more And IT triple oriented, IT are more IT oriented. right? Yes. Yes. तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि but the placements of triple IT Bangalore, Hyderabad are equally good, very good. very sir. good. They're They're very offering. good. Especially they are good courses for the computer science and Sir, in fact, I was speaking IT. to one of our students who is a pass out, who's done his B.TECH in computer science, though it's not related to mechanical engineering. He's done his B.TECH from Triple IT Bhopal, right. and he says that the average package for the B.TECH graduates there this year, that is 2023, is touching 18 lakhs. So definitely there are very good opportunities. Further, let us move to the other reputed colleges which take through the gate. Based on GATE. Yes. Based on GATE. These are again Jadavpur University, Kolkata, College of Engineering, Pune, Punjab Engineering College, NSIT Delhi, Dhirubhai Ambani Institute of Information Technology, Gandhinagar, VIT, VJIT in fact, and VIT also. VIT and also. VJTI. दोनों हैं. दोनों. दोनों हैं. Then Jawaharlal Nehru University, JNTU Hyderabad, Thapar University and University of Hyderabad, Osmania University, Jamia Millia Islamia, AMU, Tejpur University, VJIT, VGTI, and Defense, right? DIT. DIAT is offering a variety of courses which are specifically aimed at If giving students you a want foothold. to do masters, there are the Lot of opportunities are I there, will sir. say multiple options, And with very precise specializations. right? And what about the other institute which offer the separate entrance? If you have not performed well in GATE, you could not clear GATE, still you have a chance. Write some entrance examination, BITS Plani, yes. Number one is BIT BITS Pilani, Mesra hai, yes. Nirma Institute, Sarda University, then for girls, Banisthali, Modi Institute for Girls, and ISI Kolkata. This is also a good In college. fact, yeah, these JNU three- and ISI, they are for computer science. These three are for computer Science. Yes. Delhi University South Campus is for electronics, Electronics also, as but the first two are only for computer science. Right, they are for computer. Now some information about the last date to apply. इसको थोड़ा modify कर लीजिए. जो ISC Bangalore है, It is the 26. date recently has been seen. Correct. This date you have to just modify. It has now changed to 26th. Yes. So 26th of March. Earlier it was 23, but now it has been changed to 26th. So this is date. IIT Delhi, Madras, Bombay, Kharagpur, Jodhpur. तो दोस्तों ध्यान रखना कि date you have to go through the website, and again there are many more yet to notify. A lot of them have still not notified. अरोड़ा जी, स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि हमें एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा या हर कॉलेज के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा IITs के केस में? Sir, IITs के केस में for every institute you have to fill separate form.
राइट तो दोस्तों IITs का फॉर्म अलग अलग ही भरना पड़ेगा, जहां अप्लाई करना चाहते हैं वहां का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और एक और चीज है, सपोज यू हैव गॉट मल्टीपल गेट स्कोर्स, some of the IITs are permitting you to put in multiple applications for each separate year's gate score. राइट Some IITs have a limitation of maximum of 12 courses, some have a limitation of on one single score maximum of 4 courses that you can opt for. That is what is the thing. But you must look at the specifics on the website of the respective IITs. That is what you must do. That is a caution which is important to be observed. राइट दोस्तों आगे चलते हैं कोर्स स्पेशलाइजेशन पर। और कोर्स स्पेशलाइजेशन में हम बात करेंगे कि विच कोर्स इज बेटर अमंग द ऑल। सो मैकेनिकल में अगर हम देखें तो मैकेनिकल में डिजाइन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विच इज कॉल्ड मशीन डिजाइन, ये मोर और लेस दिस इज द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इंडस्ट्री में इसकी डिमांड ज्यादा है। सो द डिमांड इन द इंडस्ट्री इज मोर। सेकेंड नंबर पर है थर्मल, और थर्मल एंड फ्लूइड समटाइम इट इज ए कॉमन, जैसे IIT nomenclatures. IIT कानपुर में थर्मल एंड फ्लूइड है, दिल्ली में थर्मल इंजीनियरिंग है, सो लाइक दैट। थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, जिसको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कहते हैं। फोर्थ इज इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इज नंबर 5। मटेरियल साइंस, metallurgy, these are core branches. These are core courses. Yes. But for mechanical there are many interdisciplinary branches: energy studies, robotics, climate science, yes. Then aerospace engineering. Apart from that, applied mechanics, applied mathematics, computer applications. IIT Delhi, for example, is a very highly sought after program with very good placements. Students को ये भी बता दें कि what is meaning of the interdisciplinary branch and what is meaning of the core branch. So friends, these branches which you see in the screen are the core branches. Core means mechanical की core branch है. Production students can also apply. Interdisciplinary are those which are open for various engineering graduates. आपके साथ में वो सिविल वाले भी पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ेंगे, एरोनॉटिकल, anybody can take the admission. So those are interdisciplinary. Now let us start the admission procedure and the cutoff idea starting of the with ISC Bangalore. Yes. So dear friends, as I told you, in ISC Bangalore there are two type of the courses. One course which offers admission only through the gate, and that is 100% is the gate score. Yes. Second is the 70% gate score weightage and 30% either written or interview or maybe both. Depending on the number of applicants. Right. Yes. And B.TECH percentage requirement, only second class degree is sufficient. Gate score is more important. And last date to apply is 26th of March. Yes. Right. ISC Bangalore programs offered, एक तो M.TECH हो गया, which is directly through the gate score. दूसरा है M.TECH research. This course is little higher, 2.5 to 3 years. And यहाँ पर interview होता है. यहाँ पे interview is almost mandatory. First course is the better preference, M.TECH. This course only through gate is the better preference. Second preference comes to the M.TECH research. Sir, for M.TECH also, it can be a 70-30. Like the top scorers are given direct admission to M.TECH courses, and relatively lesser score is on the basis of 70-30. 70% weightage of gate score and 30% weightage of interview. Third course is also available here. That's dual degree. That is dual degree program, M.TECH plus PhD combined. So this is gate score and interview here again. अच्छा, इंटरव्यू का भी थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि किस तरह का इंटरव्यू होता है. See, interview for M.TECH courses in almost every institute is going to be fully technical. They are not going to be asking you questions related to your hobbies. They are not likely to talk about your extracurricular activities. There may be a discussion related to your B.TECH project. And summer internship is almost missing in case of the M.TECH interviews. So friends, public sector interviews are very different than the M.TECH interviews. In M.TECH, you need to focus on your technical subjects, basic definitions and application, especially show your interest in the technical, and do not bring in discussion the public sector and engineering services interest. Strictly no. Strictly. Otherwise say, okay, very good, please prepare. ध्यान रखिए. So in ISC, one is the mechanical engineering, other is aerospace engineering, and inside the mechanical courses like there are some other courses also apart from these: product design, climate science, earth science, computational data science,
स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, नैनो साइंस, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं। ISC has a variety ऑफ द कोर्सेज। Yes, yes. राइट। फर्दर ISC में अगर हम कट ऑफ देखें मैकेनिकल का लास्ट ईयर का, तो कट ऑफ एज इन मैकेनिकल लास्ट कट ऑफ वेंट टू 750 एंड दिस इज द कट ऑफ एलिजिबिलिटी कट ऑफ इंटरव्यू के लिए जो जिनका इंटरव्यू हुआ था। जो डायरेक्ट एडमिशन का कट ऑफ है वो तो ज्यादा जाता है, वो तो 900 टॉप 20 रैंक्स, टॉप 25 रैंक्स मैक्सिमम। एरोस्पेस में भी 800 तक इंटरव्यू कॉल आया फॉर ME। यस, फॉर ME मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एरोस्पेस अप्लाई करने के लिए, एरोस्पेस में अप्लाई करने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स का 800 स्कोर कट ऑफ था जनरल कैटेगरी में। It is a sought after branch. Right, It is general. quite a sought after Student can see here the OBC and respective cutoff, they can see here. Further cutoff की अगर हम बात करें तो जो नैनो साइंस है वो उसमें कम गया, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस में अराउंड 800 था जनरल का और EWS का 750, अर्थ साइंस वाज अराउंड 700, तो they got the interview call and they got the interview call. Right, this was the interview call. अब IISc से IITs कैसे डिफरेंट है? IITs में जो कट ऑफ है यहाँ पर भी वही है पैटर्न की, देयर कैन बी डायरेक्ट एडमिशन और देयर कैन बी गेट 70 to 80% and 20 to 30% इंटरव्यू और समटाइम रिटन आल्सो, अगेन डिपेंडिंग ऑन द डिमांड। राइट। IITs में बीटेक में डिग्री परसेंटेज की इंपॉर्टेंस है, थोड़ी ज्यादा चाहिए, 60% इज रिक्वायर्ड और 6.5 CGPA, ये जनरल OBC के लिए है, SC ST के लिए 55%, 5% less. But still IIT Madras and IIT Kanpur, That is an exception. These two are the exceptions. Yes. Where second division is also Right. acceptable. And further scholarship provision is there 12,400। और दो तरह के कोर्सेज होते हैं these 2-year courses में, एक तो हाफ टाइम टीचिंग असिस्टेंटशिप या फिर हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप। Meaning here is that if you have joined M.TECH, you have to opt any of the STTA or HTRA, any of these two. If you opt for HTTA, then apart from your M.TECH study and project, you will be having the assignment of teaching to the undergraduate students. Maybe you take labs as per direction of your guide. Right. Second is you can opt for HTRA, तो आपको अपने प्रोफेसर को गाइड को रिसर्च में असिस्ट करना होगा। There are a lot of research projects which the professors are undertaking on behalf of industry, and you can be, using, and they can be using your services for helping them with the research work. और ज्यादातर लोग जो है टीचिंग असिस्टेंटशिप को प्रेफर करते हैं, lesser load, ज्यादातर टीचिंग के लिए प्रेफर करते हैं। अब कट ऑफ के बारे में एक थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, all these slides or PPT having the cutoff will be made available in ME+PI website latest by tomorrow evening to mechanical engineers, and will be circulated through the ME+PI Telegram channels also. And if you will have still query, then you are required to register yourself in ME+PI website for personal assistance, that is in post-gate counseling, and we will conduct some Zoom sessions. We'll be conducting Zoom sessions. ME+PI will also conduct some guidance to its students for the interview program in public sectors, और M.TECH के लिए तो मोस्टली बेसिक डेफिनेशंस पढ़ के जाना है, टेक्निकल पढ़ के जाना है। They don't ask you to solve numericals. I mean, if that is the question which is troubling you, they will not ask you to solve numericals. But yes, the build-up of the solution is something which they will look for. The approach. IIT Delhi का जो कट ऑफ दिखाई दे रहा है, this is the cut off for interview call. Yes. This is not the cut off for the not final the final selection. Admissions. No. ये है cut off for interview call. आप देख सकते हैं same cut off for the machine design, industrial engineering, production, thermal. It was the same cut off. So they called, and thereafter, तो first 4 branches means machine design, mechanical design जिसको कहते हैं, industrial engineering, production and thermal का same cut off. तो ये कट ऑफ है इंटरव्यू कॉल के लिए। आपको इंटरव्यू में बहुत अच्छा करना होगा, यू कैन गेट थ्रू। फिर अगर हम मुंबई का देख लें तो सिमिलर, नियर अराउंड सिमिलर। तो अभी स्टूडेंट लिख रहे हैं कि 600 में कॉल आएगा, नहीं आएगा, कॉल आ सकता है। सिलेक्शन, फाइनल एडमिशन
is a question mark. राइट जितना अच्छा स्कोर होगा आपका गेट में उतनी वेटेज आपकी अधिक बनेगी. The chances of getting final admission call will keep on elevating based on your gate score being higher than 600. Right. So further, if we move to IIT Madras, this cutoff is high. Here there was no interview. It was a direct admission. Final interview. Final. This is relating to 2021, though the data for 2022 has now been uploaded by IIT Madras on their website. So the student can see. Yes, yes. Right. And then IIT Kanpur, again a call This for is the cutoff call. Cutoff call. Yes. Cutoff call. 750, 750, 750 and randomly for all. This is, I mean, they have given it same for all the specializations that they are offering. Right. Kharagpur was 656. Kharagpur did not conduct any interview. They took the direct They admission. just took the admission. For ME course 1, ME course 2, Like, ME course these 3. are the three separate specializations which they have. They have given the Different acronyms cutoffs. details on their website. Websites. Yes. Right. अगर हम यहाँ कैटेगरी में देखें जैसे ओबीसी में है 643, एससी में देख लें 515, ईडब्ल्यूएस में 651. EWS is higher than at times OBC. हाँ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस गो पैरेलल हैंड टू हैंड, कभी ये हायर कभी वो हायर. Yes, बिल्कुल. सो दिस इज द कट ऑफ द खड़गपुर. गुवाहाटी की कट ऑफ अगर हम बात करते हैं तो इट वाज 510 अगेन फॉर द कॉल. वाराणसी 717 डायरेक्ट एडमिशन नो इंटरव्यू. This is again related to 2021. 2021 कट ऑफ. राइट. क्योंकि Multiple 2022 requests for RTIs failed to evoke a response. कभी कभी इंस्टीट्यूट के पास खुद ही डेटा कंपाइल्ड नहीं है, वो नहीं दे पाते. Yes, yes. Hyderabad has given 2022 cutoff, and the cutoff for the last cutoffs are 626 for design and manufacturing, mechanics and the design is 651. So Smart mobility has an exceptionally high cutoff 786. here. Yes. देखिए IIT Hyderabad is more tech city. IT related. Tech city, Yes. South India tech city. So Yes. obviously the new courses Yes. are being preferred by the students there. Gandhinagar cutoff is 488 for the call, and then Patna cutoff is 500, 645 for mechatronics, mechanical के लिए 500. This is the general idea of the IIT's cutoff. तो इससे ना स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाएगी कि कट ऑफ कैसे वेरी कर रहे हैं. It helps in at least a first cut decision. Right, first cut decision. So dear students, this will give you idea. You can gauge your performance and your chances कि where you stand today and whether at your gate score you will be able to get a chance of the interview call or not. If yes, you can refer these data will help you as a reference point. This is a good starting point. Yeah. फिर IIT धनबाद है, is coming to the 590. तो अरोड़ा जी एक चीज तो है कि अगर 550-600 की रेंज में है तो कोई ना कोई IIT में चांस तो बन सकता है. within reach. बन सकता है. Yes, yes. राइट, चांस बन सकता है. 650 above, the olden IITs can be Chance and opted 500 for, plus and in the new 500 IITs, plus even can be for in the the new EWS IITs. in general yes, and OBC yes, also. yes, yes. रोपड़ में देखिए मैन्युफैक्चरिंग में 445 के ऊपर भी Ropar chance. has good placements, sir. Ropar has good placements for mechanical. IIT मांडी अगेन 547. थर्मल फ्लूइड का Thermal is कट ऑफ ज्यादा जाता है. 657, yes. मैकेनिकल इंजीनियरिंग 547 एंड तिरुपति 551 फॉर द डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग. OBC 450, SC 354, PH category 504, Palakkad 382. It's very new. New Probably the first batch or Evolving the second campus. batch. Yes. evolving campus. Yes. Right. IIT Goa, it was 537, 392, 366. IIT Jodhpur, and in the same range of Advanced 500. manufacturing is 597 here, sir. Advanced manufacturing is little Yes. higher cutoff. IIT Dharwad 471, and then programs in Jammu, IIT Jammu 530. They have only one This is the idea which is being generally floated. Right. We can see some of the students are writing the messages here. Abhishek Kumar in mechanical says 828 rank, score is 661, category is OBC. Sir, PSUs के क्या chance हैं? CGPA 9.25 chance of PSU. Wait for PSUs. PSUs पर हम लोग आएंगे. थोड़ा सा. Dear friends, just wait. Maybe and 10 we will minutes give more. you the complete
Yes. Idea about PSU. Most of these students have the question related to the PSUs. Correct. Correct. Jayesh Patel says mechanical score 554, OBC category 8.5 CGPA, chance of the M.TECH data science in any college. Data science. Data science is a very highly sought after course. Yes. So that is what Actually makes things. interdisciplinary course hai wo. Yes. So And it cutoff has thoda- high placements. That is the Right. more important part of it. Right. Yes. And then Subham Nath says, sir, will the gate score come down a little bit this time compared to last year, as students are there, less number of students are there? Marks may come down, but score will not. मार्क्स तो वैसे भी इस बार का पेपर Score will मतलब सिमिलर है, तो almost दैट in a इज नॉट similar range. लेस. Score will remain in a Score similar is range. almost And anyway, similar, it's a but yes, relative he marking. is not wrong. If number of students are less, then the score will come down. That is also there. Yes. जैसे आप अगर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल में देखेंगे तो उसका स्कोर कम होता है सेम रैंक पर. बहुत कम होता है क्योंकि उसमें तो नंबर ऑफ for स्टूडेंट्स this इज ऑलमोस्ट his 110. question is genuine, Yes. and this is obviously there will be some change on the Some basis reduction. of the Marginal reduction change can will be come. expected. Yes, you are right. And then students asking more question on, sir, Uday Chaudhary, Uday Sekhar, which IIT conduct interview and which IIT prefer direct gate score? देखिए डायरेक्ट एडमिशन में एक तो IIT खड़गपुर है, हाँ, IIT रुड़की है, IIT रुड़की है, राइट, BHU, IIT मद्रास है, BHU also, IIT BHU है, Yes. IIT गुवाहाटी है, और जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें से दिल्ली, मुंबई, कानपुर, these are and definitely willing to. they take it, and even sometime IIT Roorkee, sometime for the some courses. IIT Roorkee only when the number of applications is much higher than their Right. seats. Kharagpur takes directly. Kharagpur is giving direct admissions. So yes. for this is the information which I hope you find it suitable. And Kesav Agrawal all says that All India rank 205. What is my chance in PSU? Call yes. थोड़ा पहली बात तो 200 पे पूरा चांस है. दूसरी बात थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा सा रुकोगे तो we will be able to share the better idea. But And 200 is a very good rank अब- to expect multiple PSU calls. so friends, from ISC and IITs, my conclusion is that you have to choose good course and good college. And if your score is above 600, you get opportunity in IITs in your core branches also. But if your score is less than 600 and you still want to do masters from IIT, then interdisciplinary courses are also available. They are open. And in new IITs, even it comes down below 600 also. I am talking for the general Core category, programs. open category. Yes. For the other category, it will be further lower. तो घबराना नहीं है. एक चीज और ध्यान रखिए. If you have your score 800 and last year cutoff was 600, it doesn't means you are 100% secured. Yes, you may be secured in some of the IITs, but not everywhere. Not everywhere. Not everywhere. It means you have to apply at multiple places, and until and unless you get your call letter in hand, you have to put your efforts. You have to be prepared. yes. तो इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस पे अप्लाई करना है. एमटेक में भी अप्लाई करिए, और अगर आपका रेंज में है, पब्लिक सेक्टर की रेंज में है, तो PSUs में भी अप्लाई करिए. So now let us talk about the NITI Mumbai. Yes. This NITI is very good college, especially for the mechanical and PI. Mechanical and For PI. both of these branches, this is very good college, and it offers the courses postgraduate diploma in industrial engineering and postgraduate diploma in Sustainability management. गेट स्कोर के अलावा ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू की भी वेटेज है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एकेडमिक्स की भी वेटेज है. सो लेट अस सी द कोर्सेस PGDIE, PGDSM, right? BTech in any branch will work. Any branch is accepted. NITI And मुंबई even में gate score in any discipline. जो Gate- सिलेक्शन any gate क्राइटेरिया code. है NITI Yes. मुंबई में, उसमें क्लास 10th और 12th की भी वेटेज है 5% 5% each. BTech की वेटेज है 10%, एंड गेट स्कोर की वेटेज है 35%, एंड GD की वेटेज है 15%, एंड इंटरव्यू की वेटेज है 30%. Almost the highest. हाँ, अब आगे बात करते हैं कि कितना कट ऑफ लास्ट ईयर रहा, Yes. और किस कट ऑफ पर इस बार आपको बुलाया जा सकता है. तो दोस्तों, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था
तो दैट वाज अराउंड 750 एंड ये सभी ब्रांचेस के लिए सेम है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म फॉर ऑल इफ यू ब्रांचेस हैव योर फॉर ऑल गेट कोड्स. गेट स्कोर मोर देन 750 फॉर द जनरल ईडब्ल्यूएस, 675 फॉर ओबीसी, SC ST में 475 and 300 respectively, and your BTech percentage is more than 60 for general EWS and 55% for the other categories, you can apply. General EWS OBC में 60%. In You fact, can apply. there are number of queries. और अगर related to आपका this. इंटरव्यू अच्छा हुआ तो आपका हो सकता है GD अच्छा कर लो, इंटरव्यू अच्छा कर लो, एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर आपकी अच्छी है तो उसकी वेटेज 10% है, डिग्री की वेटेज की 10th और 12th 10 में plus 10, 20% हो गई. वहां पर भी 5+5 है. तो ये था नीटी मुंबई का. नीटी मुंबई के बारे में और भी बता दें कि यहाँ के कैंपस प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, 2-2, 3-3 जॉब बच्चों को लग जाते हैं. 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख के पैकेजेस मिलते हैं और स्टडी लोन मिल जाता है. हाँ, फीस थोड़ा ज़्यादा है. फीस इसका it's about 12 lakhs, almost 12 lakhs for the total fees for 2 years. But out of 12 lakhs, you can take it that 24 months into 12,000. That means around 3 lakhs is coming as the GATE MHRD scholarship. The internship that you do at the end of first year, that also gets you between 1.5 lakhs. And one can easily get the education loan. Easily. No, when they are sending the admission letter, they are sending along with that in the docket, they are giving the application form for banks who are ready to fund you. So now we will talk about the CCMT, admissions in the NITs and some other colleges, equivalent colleges. दोस्तों, IITs में कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जहाँ पर इंटरव्यू होगा और हर IITs का आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा. ISC में भी दोनों तरह के कोर्सेज हैं, डायरेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ गेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू एज वेल. लेकिन NITs में जो एडमिशन प्रोसेस है, दैट इज ओनली एंड ओनली डायरेक्ट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर. देयर इज नो इंटरव्यू प्रोसेस and there is only counseling system, and this online counseling system is called CCMT. There are multiple rounds of the allocation of the seats. तो CCMT के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 31 NITs के लिए प्लस सेंट्रली फंडेड गवर्नमेंट कॉलेजेस इंक्लूडिंग IITM ग्वालियर, IITM जबलपुर, कर्नूल, कांचीपुरम, इलाहाबाद, बड़ोदरा, लखनऊ, भुवनेश्वर, पुणे, फिर IIEST शिवपुर, हावड़ा, पैक यूनिवर्सिटी, फ्लाइट लॉन्गवाल पंजाब, NIFFT रांची एंड NITTR चंडीगढ़. इन सब के लिए एक सिंगल कॉमन एंट्रेंस विंडो है, दैट इज कॉल्ड CCMT. CCMT में अप्लाई करने के लिए आपकी स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. You have to be very careful in while applying for CCMT. अभी इसकी डेट्स नहीं आई हैं, बट नॉर्मली दे ओपन टूवर्ड्स ऑन द मे बी द 4th Monday of May. That is a tentative timetable which they have. We are going to show you the list of the dates which are applicable, which were used for the last year's process, right? Criteria, of course, is 60% for during your BTech or 3 categories 60% and 3 category 55%. Right. General, EWS and OBC 60%, 60%, SC, ST, PWD 55%, 55, और equivalent CGPA. Right. फिर students must have the valid gate score, चाहे वो 21 का हो या 22 का या 23 gate. 23. Now counseling में process क्या है? The stages of counseling. फर्स्ट इज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टार्टिंग विद रजिस्ट्रेशन. वंस एक बार रजिस्टर कर दिया, यू हैव टू लॉक योर चॉइसेस. इसमें इंस्टीट्यूट को भी चूज करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एंड स्पेशलाइजेशन को भी चूज करना है. yes. फिर इसके बाद फिर राउंड 1 अलॉटमेंट होगा. इफ यू डोंट गेट द सीट इन फर्स्ट अलॉटमेंट, यू देन ऑटोमेटिकली यू आर कंसीडर्ड फॉर सेकंड. फिर थर्ड, एंड व्हेन देयर इज अ चांस टू चेंज योर प्रेफरेंस. सी suppose you have opted for, let's say, machine design, thermal, industrial engineering. I'm just taking a simple example. Just you have applied for these 3 branches in NIT Trichy. Obviously your number 1 preference is machine design, but you are getting industrial engineering in NIT Trichy. In that case you have the choice of either freezing industrial engineering in NIT Trichy, or you say no, I want to let it slide up. This is one situation.
The second situation is you have got industrial engineering not in NIT Trichy, which was your first three choices, but you end up getting industrial engineering in maybe NIT Warangal, which is your sixth choice. Now, in this case, and you are happy to settle down in Warangal only. What you can do is you can say that I want to remain in NIT Warangal. That means I don't want to move out of NIT Warangal. I have only look for vertical increase. I am not looking at any horizontal movement. So both these options are possible to be locked at the end of every round. Right. So third round के बाद फिर special rounds हैं, round 1, Special round 2, rounds फिर इसके बाद spot round है. Yes, that is the national spot round where you can even apply a fresh. And n number of the choices you can fill. Limitation is not there. No but limitation. Only thing is you have to consider, like you have to check the seat availability matrix, which they keep updating after every round. After third round, choice of the Yes. this change of choice is allowed. Yes. Right. So this was dear friends related to the CCMT process. आगे चलते हैं कि I'll pass to the cutoff and finally cutoff related information is and dates. Dates. Yes. This is the last year's date. And this year will this be year similar. also tentatively will be same. Similar. Last year form was open on 23rd May and it was last date to apply 10th June. Then locking of choices on 13th June, then 16th June, first allotment 25th June, 4th July, 19th July, 26th July, 4th August. So special round continued till 4th August. This year it may start from 22nd May. Maybe. Being Monday. Right. Monday. That's only criteria. Right. Yes. So for this may be a similar range. There are many students putting the doubts, but I think we will take the doubts towards the later phase. It will be more relevant once we discuss the approximate cutoff of the PSUs also. अब NITs का थोड़ा idea दे दीजिए. We have already spoken that Trichy, Warangal, Rourkela, Furatgar, NIT Allahabad, they are very preferred NITs. Good placements. That is why the cutoffs are even parallel to the some of the IITs. In fact, some of the NITs have cutoffs which are higher than for some of the IITs. हाँ, new IITs से तो New higher. IITs से तो higher है ही है. And that is because of the better placements. Yes. Yes. So placements is the और फिर ये जो old NIT है, although the name is NIT, but they are very reputed engineering colleges. Very well established. They have really earned respect for themselves in the, let's say, in the eyes of the prospective employers. That is why. Like here we have 780 for manufacturing technology in NIT Trichy, which is higher than for thermal. And they don't have But this machine is the design. first round. If you see the minimum one, third round. Minimum would be obviously. Please see here round 1, round 3. Round 3 means cut off in round 3. इसके बाद special round भी है. उसके बाद तो 3 राउंड और हैं. और हैं. तो और cut off इससे भी नीचे नीचे जा जाएगा. सकती The data है. is after the third round. But there are special round 1, special round 2 and the SWOT round. तो यहाँ पर cut off और नीचे आती है इसके बाद. Just for the idea, cutoff of the Warangal is parallel to the Trichy, near about parallel to the Trichy. Students can take the screenshot also. Otherwise, the PDF will be available. PDF will be available to you within a day. We will Yes, it will be made available to you tomorrow itself. Calicut. Calicut is lower. Lower. Calicut. जैसे जैसे आगे चलेंगे, lower होता जाएगा. Furatgal, same parallel. Is again in the top 3. Right. आप देखिए, opening at 814. That's the highest. And third कट ऑफ 600 प्लस और वो EWS के लिए भी 583 तो कट ऑफ तो जा रही है बट एक बड़ा मतलब इंस्पायरिंग फॉर द SC ST स्टूडेंट देखिए 276 में भी ST कैंडिडेट्स को थर्मल मिल रहा है सो इफ यू आर कीन यू कैन राइट एंड इलाहाबाद आल्सो लिटिल लेस साउथ के जो ये 5-6 NITs हैं cutoff goes higher because of the campus placements. Yes. Because of the campus placements. Karnataka, Telangana and Tamil Nadu. These 3 NITs are going the highest. Right. Then it comes to the Allahabad, Rourkela. These Rourkela thermal is attracting a good good score. Thermal तो हर जगह अच्छा कर रही है. Machine design in thermal they are preferred courses. Yes. Preferred courses. Then Bhopal 400, EWF 330. Surprisingly, Bhopal Sardar is going very and low. then this is the NIT Surat. Surat Surat ka cut off opening
थोड़ा ओपनिंग तो ठीक है, हाई हुआ, लेकिन क्लोजिंग इज वेरी 420, 414, 388, 369. Those of you who have asked questions related to the possibility of a core sought after branch in NITs, very clearly this is a good indication, and NIT Surat is a good place to study. राइट दोस्तों, आप देखते जाइए, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिलेगा, और ये आप पर है कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हैं, बट सम कॉलेज यू विल डेफिनेटली फाइंड, क्योंकि आप देखिए कट ऑफ पे अभी ये स्पॉट राउंड इसके बाद और भी कम आएंगे, स्पॉट राउंड के बाद तो और फर्दर रिडक्शन इज देयर. हाँ, एंड इफ वी सी NIT जालंधर 351 में जनरल का कट ऑफ है गया है, EWS 339 गया है, और SC के लिए 247 है, OBC के लिए 335 है. इट इज नॉट ए वेरी हाई कट ऑफ. फर्दर NIT कुरुक्षेत्रा 400 की रेंज में. देखिए कुरुक्षेत्रा बीइंग क्लोज टू दिल्ली थोड़ा कट ऑफ हायर रहता है. देन NIT नागपुर 402, 385, 460 थर्ड राउंड कट ऑफ. हीट ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल, कैड कैम, थर्मल एंड फ्लूइड. थर्मल का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, मशीन डिजाइन का भी. थर्मल मशीन डिजाइन, हाँ, थर्मल एंड मशीन डिजाइन कट ऑफ इज गोइंग हायर. Durgapur is good attracted a lot of college, candidates, and students of Northeast as well as students of West Bengal and Bihar, they merge to they go to Durgapur. It's a good Durgapur, college. Rourkela and Silchar, these are the three more preferred NITs. Right. Then Hamirpur is relatively lesser cut off. Yes. Further, Patna, the third round cut off Third round 392 cutoff for is the very general. low, yes. OBC के लिए 320. Even OBC design is 326. 374, sir. OBC 326. EWS 320. Then thermal science and computer integrated design and manufacturing cut off CIM. in the Yes. Jamshedpur. Then Silchar, and we can move to the Srinagar. Just have a look. A student can find this and can pass it. Just idea. NIT Raipur, little higher. NIT Bhopal, Raipur, they are parallel. They इलाहाबाद almost at par. के बाद भोपाल, रायपुर, जयपुर, कुरुक्षेत्र and Surat. सूरत, Nagpur. नागपुर, ये लगभग They are पैरेलल है. See the columns in which we have displayed the NITs. Column 1 is probably the top most sought after, then column 2, then Trichy, column 3. Warangal, You can Surathkal, almost make Rourkela. out. Yes. That is the way we have even presented it in Andhra the Pradesh, NIT Andhra, This is a new 484, 399. Then NIT Meghalaya, 359, general category, OBC 358, SC category 251, 279 ST category. Then IIEST Shivpur, and this is even parallel to the NIT Shivpur. It is outscoring some of the NITs. Yes. And then you have the National Institute of Advanced Manufacturing Technology, and this is the cutoff of 400. University of Hyderabad, similar 354. अच्छा, एक चीज इसमें बता दें कि प्रोडक्शन और मैकेनिकल में लगभग कट ऑफ बराबर जाती है, एंड मैकेनिकल का थोड़ा सा कट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे रहता है. इसका मटेरियल इंजीनियरिंग का. हाँ, नहीं, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से गेट है और दूसरा और कोई PLI प्रोडक्शन से है, तो मैकेनिकल वाला थोड़ा नीचे जाएगा. मार्जिनल. दिस इज, देखिए ये कट ऑफ ज्यादा जा रहे हैं. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, DIIT, and here Specialized learning and less number of seats. right. 50% seats in these एरोस्पेस courses. का कट ऑफ नॉर्मली इसका ज्यादा जाता है. एरोस्पेस का इसका भी वहाँ IISc में भी. एरोस्पेस एक IIT मद्रास में है, IIT कानपुर and IIT IIT कानपुर and IISc. IISc बेंगलोर, एंड देन बॉम्बे. डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे. पैक 350 इन द रेंज. जबलपुर जनरल के रैंक दे दी इन्होंने, यहाँ पे रैंक दे दी. लास्ट ईयर की रैंक है 3000 रैंक तक इन्होंने जनरल में, और 5900, ऑलमोस्ट 6000 रैंक OBC. 3000 रैंक मींस अप्रोक्सीमेटली 500 के करीब स्कोर होगा. अब PSUs की बात कर लेते हैं. पहले कुछ इनके M.TECH से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सो वी कैन जस्ट हैव ए क्वेरीज टू सॉल्व देयर.
बहुत सारे क्वेश्चंस फ्लो हो रहे हैं, स्टूडेंट्स आर सो इंथ्यूजियास्टिक. सर, हाउ मोर PSU jobs, high rank at low gate score? Chaudhary, I am not able to get your exact question. Can we see fall in cutoff of NIT and IITs? बहुत ज्यादा वेरी फर्क नहीं पड़ेगा, नॉमिनल, थोड़ा वेरी बहुत फर्क पड़ेगा, नॉमिनल, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. बहुत कम फॉल होने की उम्मीद है. राइट. बिकॉज देयर आर लाइकली टू बी मोर कैंडिडेट्स लुकिंग फॉर परस्यूइंग एमटेक. Jayesh is asking, sir, mechanical rank 926, gate score 649, SC category. SC category में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. PSU calls can be expected. PSUs भी आ जाएगा आपको IOCL और M.TECH definitely में भी you will आराम get a से मिल call if जाएगा. you are interested. If the अभिषेक कुमार राजपुरी, मैकेनिकल रैंक 1849 एंड स्कोर 577, कैटेगरी एससी. एससी कैटेगरी में तो कोई ऐसा प्रॉब्लम SC ज्यादा category नहीं up होना to चाहिए. 2500 rank can be expecting calls from Easily, multiple even PSUs. हाँ, PSUs में भी कॉल मिल जाएंगे. And once I have started taking queries, the questions are flowing now. Amal Agrawal, I got 1971, that is scores 569, and I am in final year. I got also placement in Adani. What should I do? 6.5 lakh. तो देखिए अमल, ultimately it is your choice. Yes. If you want to be in private industry, you can go ahead. It is a good, reasonably good package, 6.5 lakhs. But if you wish to pursue further, अच्छे कॉलेज में जाना है तो जा सकते हैं. 1971 is not that very impressive rank. तो 1971 rank will not offer you a top class IIT because it will be NITs you will be able It will to be get. NITs and that too in the second column. यस. और फिर आप अभी फ्रेशर हैं, अभी कॉलेज में, अभी जॉब ज्वाइन कर लीजिए. आपको जॉब के साथ प्रिपेयर करो, ना मजा आए, नेक्स्ट ईयर अच्छा स्कोर जॉब के साथ प्रिपेयर करो, गेट स्कोर को इम्प्रूव करो. राइट. मोहसिन साहू, सर जो कट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है वो क्या एक्सी के लिए भी सेम ही होगा? नो, नहीं, एक्सी का कट ऑफ अलग होगा. एक्सी हर जगह एप्लीकेबल भी नहीं है, हर कोर्स के लिए एप्लीकेबल भी नहीं होगा. राइट. तो एक्सी का कट ऑफ अलग होगा. अपना नाम भी लिख दिया करिए, एनोनिमस नाम से आ रहा है. पीआई रैंक 90, सबसे बेस्ट स्पेशलाइजेशन कोर्स कौन सा रहेगा एंड विच IIT शुड आई ज्वाइन? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. आई थिंक जिनका पीआई पे अगर स्कोर है तो दे शुड गो फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड पीआई. अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं नहीं मुझे तो थर्मल या फ्लूइड में जाना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग, तो जा सकते हैं. But there is one more thing. भी अच्छा है इनके लिए. Manufacturing is good for PI. Manufacturing is good for PI. Sir, one more thing I wanted to share. मैं इनके लिए सजेस्ट करूंगा नीटी मुंबई भी ट्राई करो. नीटी मुंबई is expensive, but I think it's definitely worth trying. Sir, I know of a candidate. She was our student. She was a classroom student. 2017 ESE. She joined the Ordnance Factory Board. Worked for 2 years. Left. Went to NITI. And she's working with MNC now. Great. So, Ayo Franco, your question is, sir, my gate score is 676, rank is 697, unreserved category, chance of PSUs. चलो PSUs की ही बातें कर लेते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा पब्लिक सेक्टर्स का. Let us talk about the PSUs. Recruitment through PSUs through GATE. Yes. PSU recruitment through GATE. लास्ट ईयर किन में हुआ, उससे आइडिया लग जाएगा कि इस बार कहाँ होने वाला है. Sir, we already have a list of 23 PSUs who have already announced their intention to recruit 18 through GATE. PSUs ने I believe already have announced कि they will take from the GATE. More. अच्छा. Almost every week we are getting 1 or 2 plus. So you can just have an idea. These are the PSUs just a who took list. the through the GATE 2022, and you can expect these again and some more. So NMDC, IOCL, HPCL, NPCIL, BARC, DRDO, ONGC, NPCL, NTPC, MDL. I think so. YJG 2023 list is also included. You'll be able to see that. अब दो लास्ट ईयर के कट ऑफ भी देख लेते हैं किसमें कितना गया. वन थिंग विच आई वांट टू क्लियर दैट कि मैकेनिकल का जो इस बार का पेपर था और लास्ट ईयर का पेपर था वो सिमिलर ही था. इलेक्ट्रिकल का इनफैक्ट इस बार का टफ था. इलेक्ट्रिकल वाज वेरी टफ. हाँ, वेरी टफ. यस. तो IOCL में लास्ट ईयर जो गेट 2022 कट ऑफ मार्क्स आप देखिए जरा, शॉर्टलिस्टिंग कहाँ तक हुई.
मतलब 45.97 मार्क्स तक की शॉर्ट लिस्टिंग हो गई। सर IOCL में जनरल कैटेगरी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, रैंक वेंट इवन अप टू, आई थिंक इट क्रॉस्ड 800 रैंक। आप ना एनटीपीसी का ध्यान रखिए। एनटीपीसी केम विद द मल्टीपल राउंड्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। फिफ्थ लिस्ट दे हैव फिफ्थ अनाउंस्ड, लिस्ट, फिफ्थ लिस्ट और दे हैव अनाउंस्ड। 1500-1600 की रैंक तक भी कॉल आ गया। So that is because they are starting at E1, they are not starting at E2, ठीक है, which जॉब is the तो मिल रहा difference है of almost 20,000 rupees. बट स्टिल दे आर गेटिंग। Getting a stable job, getting a stable job. तो yes, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कट ऑफ है, कहीं कहीं पर स्कोर मार्क्स हैं, कहीं पर मार्क्स हैं, कहीं पर स्कोर है। BRC का स्कोर है, बाकी जगह मार्क्स दिए हाँ, हैं। BRC इस list में shortlisted at 779, Yes. uniform for all these categories. दामोदर वैली It has just कॉर्पोरेशन, turned out to be uniform. MRPL का हायर गया है 87.95। MRPL because the number of vacancies is very less. That is why. ONGC had very large number of recruitments this year. That's why if you see the ONGC cutoff, it abhi aayega. You will see that it's going to be slightly on the lower side. देन फ्रेंड्स फर्दर कट ऑफ गेल, ECIL, EIL, EIL में कंस्ट्रक्शन एंड नॉन कंस्ट्रक्शन। सो द कट ऑफ्स, अब यहाँ से थोड़ा तो आइडिया लगा सकते हैं कि ये अगर लास्ट ईयर का कट ऑफ मार्क्स था तो इस बार भी उम्मीद अच्छी है। Plus minus, marginal. एंड आई हैव सीन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इतना कम कट ऑफ कम आ रहा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाया करता था प्री कोविड पीरियड में। It seems that since last 2 years, number of vacancies in PSUs have Sir, increased. this is because of the retirements which are taking place. Because ultimately, it's the replacement of the retirements which is leading to these recruitments happening at a number. Right. So this will give you the idea. And NTPC में स्कोर था 991 and This लेकिन is the ये rank, sir. लेकिन ना ये रैंक है, हाँ रैंक yes. अनरिजर्व 991 एंड EWS 1474, मतलब 1500 रैंक तक NTPC में सिलेक्शन हुआ। OBC 1400. EWS OBC में भी 1400 1400, और SC में 4500 रैंक, ST में 6000 रैंक तक NTPC में जॉब, और PWD में तो So 10,000 रैंक। Yes. In fact, 21,000 for the hearing impaired. टॉप 1000 में रैंक में भी NTPC में लास्ट ईयर जनरल में, और OBC में तो 1500 और EWS में 1400। दैट इज व्हाई आज भी मुझे याद है 2018-19 में टॉप 200 में NTPC में सिलेक्शन नहीं हुआ था। नहीं हुआ था because number of openings was less and everybody was running after अब देखिए NTPC. कि कहाँ तक टॉप 1000 तक भी PSUs मिल रहे हैं। इसलिए दोस्तों होपफुल One रहिए, grade अप्लाई lower. करिए। One grade lower. हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इंटरव्यू अच्छा कर जाओगे, और NTPC ने तो डायरेक्ट बुला लिया था। NTPC even recruitments are no interviews. नो इंटरव्यू, They have done away with GD and interview. ONGC is very preferred organization for the mechanical and Top PI preference. students. Yes. Yes. AEE Assistant Executive Engineer in Mechanical Engineering, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मार्क्स कट ऑफ था 67.28, OBC के लिए 61.69 एंड EWS के लिए 61.69। So these are the cutoffs. So they are recruiting in 4 separate disciplines for mechanical engineers. If you will just click it, production के लिए separate. प्रोडक्शन का कट ऑफ है हायर। प्रोडक्शन इज नॉर्मली प्रेफर्ड, मैकेनिकल से ज्यादा प्रेफर करते हैं प्रोडक्शन, कट ऑफ इज हायर। देन we have the Then there are drilling, 2 more, drilling and cementation. and cementing. Yes. Right. Drilling and cementing. So production, then mechanical, drilling and cementing. Yes. ये 4 different categories एक हैं और भी ONGC। category है. There is one more category for which mechanical engineers are recruited. That is for transportation. But majority of the openings for transportation are reserved for the PWD category. Majority, I'm saying. There are a few open for general category, but higher number is for PWD. Yes. केशव अग्रवाल पूछ रहे हैं कि रैंक 205 में EWS में ISC बेंगलोर पॉसिबल है क्या? आई थिंक इट इज पॉसिबल। कॉल तो आएगा, आ सकता है, कॉल इंटरव्यू तो अच्छा कर लो, अगर कॉल आ सकता है, डायरेक्ट पे नहीं मिलेगा तो उसमें तो चांस yes, इंटरव्यू के बेस पे मिलेगा। अच्छा, एक और फर्क पड़ता है, जब पब्लिक सेक्टर्स में चॉइस होती है तो बहुत सारे लोग ISC में जाते नहीं है, वो PSU की तरफ और छोड़ के आ जाते हैं फिर PSU में। तो ये था PSU का कट ऑफ दोस्तों। अब मेडिजीज के जो क्लासरूम स्टूडेंट्स इस बार गेट में सेलेक्ट हुए हैं, सर एक और क्वेश्चन, सागर हैज बीन आस्किंग व्हाट डेट ऑफ द ईयर इज कंसिडर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एज क्राइटेरिया। नॉर्मली द PSUs specify the date on which they will consider the age, and it is the last date of application for that post
by that PSU. So it varies from PSU to PSU. It is not that it is 1st of January of the year of vacancies or 31st of March of the year of vacancies. It is normally linked with the date of advertisement or the last date of applying for that job. That is what is the criteria for determining your age, whether you are falling in within the limit or you are not falling within the limit. So this is something which can be useful for number of you. हम यहाँ पर कुछ और क्वेरीज जैसे देखते हैं. देयर आर मैनी स्टूडेंट. केशव ने कितनी बार पोस्ट किया है? आई कैन सी योर सो मेनी टाइम्स. प्लीज डोंट पोस्ट रिपीटेडली. 189 rank, yes, you can expect. Sir, how and when will ME+PI help for NEET interview? Arora ji. Coming week. Coming week. The moment they announce the cutoff, yes, immediately we will conduct sessions. Once the interviews are shortlisted by the NEET, within 48 hours the session will be there. Sessions at ME+PI also. Prakhar Gupta says, कि sir mechanical score, oh I missed it. Prakhar Gupta ka nahi, I am getting flooded with the messages and this flooding is too much. Mechanical rank 299 possibility. किस चीज की possibility आप पूछ रहे हैं? PSU, yes. PSU call, yes. Yes, possibility. See, I want to give you a cautionary word. I also know of a candidate with a gate rank of 11 and not getting selected in ONGC. Interview नहीं अच्छा किया होगा. So he intentionally messed it up. I mean, either intentionally or it was a wrong day for him. So high gate rank is no guarantee of success. Deepesh is asking, I have secured rank 335 in mechanical and rank 30 in PI. Can I get PSU job in OBC category? No. नहीं क्यों? It is ME plus ME combination, sir. नहीं उसने दोनों से दिया है. PSUs are very clearly specifying if your degree is ME, then the gate code has to be ME and not PI. He has appeared in both the branches. He cannot be doing B.TECH in both the branches, sir. No, he has not done B.TECH. So he will apply based on degree and B.TECH. So that is what I am saying, sir. If ONGC, for example, they say that mechanical engineering jobs are for gate code ME only, not for gate code PI. And that's why his higher gate code, even if his PI score is much higher than ME, it will not be of any use. M.TECH के लिए यूज कर सकते हैं. M.TECH के लिए यूज कर सकता है, NITI के लिए यूज कर सकता है. NITI के लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा उसको. Jatin is asking, sir, I have less than 60% in my engineering. What are the programs and chances available in M.TECH, MS and so on? तो देखिए 60% अगर जनरल कैटेगरी है तो आपको PSUs में भी एंट्री मुश्किल है, टफ है. इस केस में अच्छा अगर गेट का स्कोर अच्छा है तो आप IIT मद्रास, IIT कानपुर, IISc बैंगलोर को अप्लाई करके देखो. बैंगलोर जरूर अप्लाई करिए. IISc बैंगलोर यू मस्ट ट्राई. आप इंटरव्यू अच्छा करोगे तो चांस बन सकते हैं. फिर अतुल्य शिवम 256 रैंक, कैन आई बी पॉसिबल टू गेट द BE? Be possible to get IOCL or ONGC call? 256 shortlist is very much possible. ONGC मुझे थोड़ा टफ लग रहा है. ONGC में भी आ जाएगा सर. लास्ट ईयर जैसे 2022 का रिक्रूटमेंट्स, there were more than 100 vacancies in all these 4 disciplines put together, and that's why the shortlisting is very much on the cards. Yes, Vardhan Singh Chauhan, my rank is 189. Can I get ONGC? 118 again. Shortlist for call is shortlist for interview is possible. तो दोस्तों लास्ट ईयर के मार्क्स के कट ऑफ आपके हमने शो किए हैं और दीज कट ऑफ्स विल बी अवेलेबल इन दी PPT ऑल्सो. PDF विल बी अवेलेबल और आप इस बार उसको देख सकते हैं. देन देयर आर सो मेनी रिपीटेड कॉल्स. कॉलेज फॉर प्लेसमेंट 3 ईयर गैप, क्या पॉसिबिलिटी है? अगर 3 ईयर गैप है तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो. Kesri Rohit says 240 rank in mechanical OBC. Which PSUs should I apply? OBC में है, 240 रैंक है. तो लास्ट ईयर आपको अप्लाई तो सभी में करना चाहिए. देखो PSUs में अप्लाई सभी में करना है. कहाँ से कॉल आएगा या नहीं आएगा और कॉल आने के बाद इंटरव्यू में आप क्या कैसा परफॉर्म करेंगे, इसलिए कीप योर ऑप्शंस ओपन, डोंट स्टॉप. सर 240 रैंक में विच PSU? केसरी रोहित का तो हो गया.
Then Naveen Jha, GATE score 620, EWS 140, EWS GATE score 620 है, rank 140 है. I think expect multiple calls. Right. ऐसा कैसे हो सकता है? इनका रैंक, ये तो कैटेगरी कुछ और होगा, मतलब बिकॉज गेट रैंक एंड स्कोर इज नॉट मैचिंग. Clarity नहीं है. There is one more candidate here, sir. The one question, BS, I don't know what is his name. My GATE ME rank is 74 and GATE XC rank is 15. My category is EWS. Which institute and branch is the best for me? Depending on your interest, I think based on your GATE score, you can get in any of the IITs if you want. You should be able to get IIT plus branch of your choice. So make a judicious combination and apply for it. अमल अग्रवाल से सर EIL के रजिस्ट्रेशन तो गेट के पहले ही क्लोज हो गया, गेट रिजल्ट के. They will ask you to upload the GATE scorecard once the GATE score is रजिस्ट्रेशन पहले करना, रजिस्ट्रेशन पहले करना और कई बार ना ये बड़ा एडवांटेजियस हो जाता है सर. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई करते नहीं हैं. PSUs they close the registration and they ask you to upload the GATE scorecard. Like IOCL and ONGC obviously comes out much later. But IOCL, for example, they have a release of the ad. They want you to register for the job, and they will ask you to update the GATE scorecard as the GATE result is announced. Jitendra Kumar says कि I am B.TECH in manufacturing technology branch. I got 453 rank. Can I get any PSU? मैन्युफैक्चरिंग में 453 रैंक. अब आपने ये नहीं लिखा कि बीटेक मैन्युफैक्चरिंग के साथ से गेट भी आपने मैन्युफैक्चरिंग से दिया, पीआई से या मैकेनिकल से दिया? He can depend on the PSUs who are conducting their own exam. That means BDL is one option, then BHEL is second option. These two are the options which are primarily open for him. Right. Nitin and even SAIL for that. Nitin Sain says, I am pass out 2019. This year my gate rank is 5000. What do I do? Category. Please guide. Category इन्होंने mention नहीं की है. But I think that कि 5000 rank is not very impressive. No. और आप 2019 पास आउट हैं तो 3 साल का गैप 4 साल का ऑलरेडी हो चुका है. बट स्टिल आई विल से कि आप इस रैंक पर आप NITs में कहीं पर भी एडमिशन लेकर के M.TECH करिए. डोंट हैव द मोर गैप फर्दर बिकॉज 4-year गैप इज ऑलरेडी डन. Right. And there are similar type of the, like Kuldeep says, OBC rank 36 and so on. Dear friends, we request all the top 100 rankers, at least top 100 rankers, to submit your gate rank and score at ME+PI also. ME+PI has a special reward system that is sponsors for the different things, and that is done for the top 100 rankers of the gate of all branches. So if you have not submitted, please submit, and beyond top 100 also you should submit. There may be some sort of the assistance and support to you. So please submit. If you will submit, then we will be able to give you the support for your interview, for your planning. So that you have to do it. So I hope this discussion will help you. And whenever there will be interview call from the PSUs, Mr. D.K. Arora and our ME+PI team will conduct the interview support programs. If you have already joined some course at ME+PI, fine, you are alumni. If even you are not the part of ME+PI, we don't mind, you are most welcome. You can take our assistance. We are always eager to support every student. All engineers are like, we are meant for engineers, so we will definitely support. ME+PI की क्वालिटी तो रिजल्ट से पता लगती है. If you will see all branches, almost all top rankers and everyone, and in top 10 there are more than 50 students from ME+PI, and out of that mostly are classroom or online classroom. So online course student or classroom course students, they have done it well. When it comes to the structured teaching, ME+PI puts the best efforts. We will give you the further support, चाहे आपका इंटरव्यू हो या पोस्ट गेट काउंसलिंग के बाद फिर आपके 1-to-1 डाउट्स होंगे या आपको फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट होगी, वी विल सपोर्ट यू. इंजीनियरिंग सर्विसेज में कुछ अच्छी न्यूज़ भी आई है. पहले 327 वैकेंसीज नोटिफाई हुई थी, बाद में वैकेंसीज बढ़ के 486 हो गई इस साल. अगले साल के लिए भी कुछ वैकेंसीज बढ़ी हैं. सो आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थिंग्स आर इम्प्रूविंग. पब्लिक सेक्टर में भी वैकेंसीज बढ़ रही हैं. दैट इज वाई कट ऑफ 1,000, 1,500 तक लोगों को, मतलब 1000 रैंक 2000 रैंक तक भी PSUs में जॉब मिल रहे हैं. सो दिस इज गुड साइन एंड बी होपफुल एंड एफर्ट्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. सो आई होप दिस
So session. you must become members of, you must join the ME+PI official Telegram channel, because related to any updates for interview guidance preparation or any Zoom sessions that we are planning, we keep notifying in that. You should not miss any of those notifications. ME+PI official Telegram channel. Yes. If you subscribe, you will get every update. Any interview guidance program comes, it is updated there. And in addition to that, you should submit your result for future assistance in ME+PI website at ME+PI Postgate Counseling session. Yes. In that. Yes. So that from there we will connect you through the Zoom. We will probably start conducting these Zoom group sessions from next week itself. Right. Okay. So thank you everyone, and the PPT, whatever we have discussed, PDF. the entire PDF will be given to you, and this will be uploaded in the ME+PI website as well as in ME+PI official Telegram channel. All the best, dear friends. You have so many queries, but I believe that your time is more important than us, and most of the queries are so repeated. Sir, this is time 2 to 5 people have same rank. This happens every year. This happens every year. Every year this happens. So don't worry. It's not something unique to this year. Yes. अब आप यहीं पर देख लीजिए, जैसे rank 333. 3 people. So 4 and 5 rank is not there. Yes. So rank 3, they got the same rank. So the 4th and 5th rank is not there. Yes. So when there is 6, 7 and They may be. तो ये जो 333 है, it means 4th and 5th rank this year will not be awarded to anybody. It will not be there. Yes. So rank is unique. If marks are same, rank is same. Yes. Thank you very much. Stay safe. Stay home. Jai Hind. All the best. All the best.